Hello everyone. This video is going to be in English and Hindi, and it's a very important video if you follow me for coaching purposes or for any knowledge. ये जो आज का वीडियो है ये मैं इंग्लिश और हिंदी में बनाऊंगा. अगर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप मुझे कोचिंग के लिए फॉलो करते हैं कि आपने मेरे से कोचिंग लेनी है, या आप मुझे फॉलो करते हैं मेरा कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, नॉलेज के लिए, तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. Reason why I'm making this video is I want to put a lot of myths to bed, okay? And today it seemed to be a good opportunity, and as you can see on the screen, one of my clients, he got a little excited, a little carried away. I understand when people are prepping for shows and when you're working hard, it's easy to get carried away in emotions and overstate how hard are you working, and that doesn't and this is not to take away that you're not working hard, but sometimes people get carried away in emotions and overstate the hardships they're facing. And this is a classic case, as you can see on your screen, where my client has gone and written dry face, tired eyes, and so many sleepless nights, 8 weeks on zero carbs, almost 72 hours without salt and without water, shows the real struggle. No one can do this, only a real champion can do. It's champion mindset, and this is called bodybuilding. होता क्या है कि जब आप बॉडी बिल्डिंग प्रेप कर रहे हैं तो आप बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं कि जैसे ये मेरे क्लाइंट ने ये अभी शेयर कर दिया, जो मैंने अभी शेयर किया था स्क्रीन पे, कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, उसमें कोई डिनाई नहीं करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग कितनी टफ है. मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता. मुझे 25 साल हो गए यही काम करते हुए. मैं हज़ारों एथलीट्स के साथ काम करता हूँ, हर रोज़ देखता हूँ, ठीक है. लेकिन होता क्या है कि जब आप इमोशंस में हाई होते हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो आप अपनी जो हार्डशिप है, जो मुश्किलें आप फेस कर रहे हो, उसको आप थोड़े मतलब कि इमोशंस में आप थोड़े एग्जैजरेट कर देते हो, और इसमें आप मतलब कि कोई झूठ नहीं बोल रहे, बिकॉज इट्स टफ. मैं नहीं डिनाई कर रहा हूँ. But the key thing here is, this is what I want to make categorically clear. No matter what you see on social media, no matter what anybody is telling you, no matter what anybody is saying to you, it doesn't matter what they are putting it on me or saying. Like if you see a training video on Instagram, somebody shared, learned it from Coach Harry, recommended by coach, recommended by boss. That's fine, that's okay, but please understand there could be a huge difference between what I taught, what I proposed, what I said, and what was then conversely interpreted and then done by the person who's saying that he learned it from me. प्लीज समझिए होता क्या है कि बहुत मर्तबा लोग इंस्टाग्राम में स्टोरी डालेंगे या पोस्ट डालेंगे या कुछ भी है, वहाँ पे वो कुछ चीज़ शेयर कर देंगे, बोलेंगे कोच हैरी से सीखा, कोच ने सिखाया. अनटिल अनलेस कि वो चीज़ मेरे मुंह से निकली है, मेरे पोस्ट से आई है, मेरे फेस टू फेस बैठ के बात हुई है आपकी, वो प्लीज़ समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो मैंने कहा था, जो मैंने सिखाया था, वही वहाँ पे इंस्टाग्राम पे हो रहा है, मैं वही कर रहा है. कई बार ज़मीन आसमान का अंतर होता है कि मैंने कुछ सिखाया है और बंदा वहाँ पे कुछ कर रहा है एंड उन्होंने टैग कर दिया, बोल दिया. प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अनलेस कि वो मैं वीडियो में हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी पोस्ट पे है, मेरा 1-2 इंस्टाग्राम के चैनल्स हैं जो ऑफिशियल हैं, हैरी संधू के नाम से, नॉलेज बाय बॉस से, हमारा टीम बॉस फिटनेस एकेडमी के, ये 3 चैनल से. टीम बॉस फिटनेस एकेडमी मेरी टीम रन करती है, ठीक है. तो लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आप नॉलेज बाय बॉस पे या हैरी संधू के चैनल पे देख रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन को ही आप मानिए. बाकी कोई बोल रहा है कि सर ने ये कहा था, सर से मैंने सीखा है, प्लीज टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. Another thing, I want to make it very clear, I do not propose and I do not practice any of the following. None of my clients use Lasix. None of my clients use harsh diuretics. Extremely rarely my clients will use diuretics, and the most generally people will use is Aldactone in very small dosages. Any client who is using harsh diuretics,
100% it is their choice. It is never my choice. None of my clients ever have used, I have never recommended to any client ever in 25 years, PGCL, Termin, AMP, any of these three drugs or any fancy drugs. I do not recommend these. I have never recommended this. Anybody who ever has told you, okay, oh, he gave me this, it's a lie. It's bullshit. Few people in the past 2 or 3 very senior clients, they decided to use AMP. That was their choice, not my recommendation. Only I do not recommend any of the harsh drugs. ये बात को स्पष्ट शब्दों में समझिए. कोई भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने बंदे के साथ मैं किसी को भी लैसिक्स वगैरह हार्श डायरेटिक्स नहीं रेकमेंड करता. मैक्सिमम मेरे क्लाइंट्स जो यूज़ करते हैं वो होता है कि हुआ कि एल्डाक्टोन वगैरह हो गया, उससे ऊपर नहीं. कोई भी क्लाइंट अगर हार्श डायरेटिक यूज़ करता है तो वो अपनी मर्जी से यूज़ करता है, मेरे रिकमेंडेशन से नहीं होता है. ठीक है. उसके अलावा कभी भी आज तक मैंने 25 साल में किसी भी क्लाइंट को ना मैंने PGCL रेकमेंड किया, ना मैंने टर्मिन रेकमेंड किया, ना मैंने DNP रेकमेंड किया है, ना मैंने और कोई फैंसी डिजाइनर ड्रग किए हैं. AMP भी मैं नहीं कहता हूं. जो 1-2 बंदे हैं जिन्होंने AMP यूज किया है मेरे साथ कोचिंग में, वो उनकी अपनी चॉइस थी, मेरी रेकमेंडेशन नहीं होती है. इसको प्लीज आप क्लियरली समझिए. Also, when it comes to designer drugs, I do not recommend SARMs, never have, not once. I do not recommend peptides. 99.99% times I do not recommend peptides. People want to use peptides. They have been using peptides. They believe in that. Fine, they can use it. But my first recommendation is steer clear of these things. Generally, for 99% clients, I don't recommend any of these things. For 99% clients, I do not recommend insulin. For 99% clients, I do not recommend GH. These things, A, lot of these things don't work, and B, lot of people don't need these things, and C, they're super expensive. आप इस चीज को स्पष्ट शब्दों में समझिए. मैं कभी भी किसी क्लाइंट को आज तक मैंने साम्स रेकमेंड नहीं किए, ना मैं करता हूं. 99% क्लाइंट्स को मैं पेप्टाइड्स नहीं रेकमेंड करता, इंसुलिन नहीं रेकमेंड करता, GH नहीं रेकमेंड करता. बहुत पहली बात तो ये कि 99% लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. 99% लोग ये इन चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. जो गिने चुने लोग GH वगैरह यूज़ कर रहे हैं, पेप्टाइड्स यूज़ कर रहे हैं, भैया उनके बजट बनते हैं, वो हाई लेवल पे खेल रहे हैं, उनको हर चीज़ पुश करनी है, वो गेम अलग है. Another thing I want to make it very clear is my stance on competitive bodybuilding, enhanced bodybuilding, since day one has been categorically clear. My advice to everybody is do not take steroids. Do not take performance enhancing drugs. I have said this billion times and I will say it again. And I tell people blatantly, I have told people in the past, you do not have the genetics, you do not have the potential to get to the top. And these guys, some of these guys were paying me 20,000 rupees a month, 25,000 rupees a month, 15,000 rupees a month. That is not a small amount. That is 3 to 4 to 5 times the money that most coaches charge. And I have still told these clients, looking in their face, spending 20 minutes, half an hour on the call with these guys, brother, you're wasting your money. Please stop. We've spent 6 months, we've spent a year, nothing is happening. Do you think, for me to make a plan for somebody and update their plan once a week or twice a week is difficult for 25,000 rupees a month? Do you think I'm stupid? That is easy money. Yet I have told, and a couple of these clients, when I also told them that your health is not supportive, what did they do? They chose to leave me and go elsewhere. They're working with other coaches and they know who they are. There's many such instances. So my stance is very clear. Performance enhancing drugs, all these things, you should steer clear. This is only for people, who have, firstly, they have the genetics.
They have progressed. They've consistently been moving up the ladder. Number 2, their health permits. Number 3, they have the money. All these things. I routinely tell my clients, brother, you need to stop. You need to go and see a doctor. All my clients, they know where I stand with health markers, with safety and all that. Each one of them. Anything you hear outside is an absolute fabrication. There is not an iota of truth. Only people who can say anything is my clients. That's it, period. 99.99% times I do my absolute best to provide them quality service. But as far as my recommendations go and my stance goes, it is unanimously across the board 100% the same advice for everybody. And I routinely tell people who are under 20, 21, 22 who come to me, do not, no matter how much money you're offering me, if you have not started a steroid cycle, my advice will always remain the same. Do not start steroids. They are not healthy. I'm not sure in which language and how many times I can say the same thing. I tell them same time. People then ask the question me, okay, then why do you coach people and why do you have people? These people are already using performance enhancing drugs. They're already using steroids. I try to keep them safe. I tell them, don't do this, and still. So, please be very clear. एक और चीज मैं आपको स्पष्ट शब्दों में आपको मैं बता दूं, मेरी जो रिकमेंडेशन है, सलाह है, ये स्टैंड पिछले 25 साल में सेम है कि भाई स्टीरॉइड्स मत यूज करो। अगर आप कंपेरेटिव आपके जेनेटिक्स बहुत अच्छे नहीं हैं, अनलेस आप रूटीनली प्रोग्रेस कर रहे हो, आपके पास पैसा है, आपकी सेहत अलाउ करती है, आप में पोटेंशियल है, तब चलो मान लेते हैं कि आपका कुछ लॉजिक बनता है कि आप इस गेम में कुछ कर सकते हो। लेकिन हर बंदे को मेरी यही सलाह होती है कि भाई मत करो। मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी थे जो आज मेरे साथ नहीं है, छोड़ के दूसरे कोचेस के पास हैं, और उनको पता है कौन है कि जो मुझे 15-15 हज़ार महीने का, 20,000, 25,000 महीने का भी पे कर रहे थे, उनके साथ भी मैंने 20-20, 30-30 मिनट फ़ोन पे बात करके उनको मिलके भी कईयों को उनको मैंने समझाया है क्लियरली कि भाई 6 महीने साल हमने लगा लिया है, कुछ नहीं बन रहा है, जो आपका गोल है वहाँ पे नहीं होना है, आपने प्रो नहीं बनना है, आप बन जाओगे तो लोअर लेवल के प्रो रहोगे, मत करो। ठीक है, उनको बुरा लगा कि जी मैं हेटर हूँ, मैं उनकी मतलब के गोल्स पे, मैं कौन होता हूँ उनके गोल्स पे पानी फेरने वाला। ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, मेरा ज़मीर नहीं अंदर से मानता कि मैं आपकी आंखों में देख के झूठ बोल दूं कि हाँ ठीक है। आपको क्या लगता है कि 20-25 हज़ार एक आम एवरेज कोच के कंपैरिजन इंडिया में 4 से 5 गुना ज़्यादा पैसा है। यहाँ पे कोई 10-10 हज़ार में 3-3 महीने 6-6 महीने की कोचिंग दे रहे हैं। अगर मैं 20-25 हज़ार प्रति महीने की टर्न डाउन करने की क्षमता रखता हूँ, कुछ तो एक तो मेरी कोई औकात है, हैसियत है, और एक ज़मीर है। ठीक है, मुझे आपको कितना टाइम लगता है मुझे प्लान बनाने में? 5 मिनट 10 मिनट में प्लान में, हफ्ते में मैंने 10 मिनट लगा दिए, और मुझे मतलब कि महीने के 40 मिनट लगाने के मुझे 25,000 आ रहा है, मुझे चुभ रहा है। मैंने क्लाइंटों को ये स्पष्ट शब्दों में बोला कि भाई आपकी सेहत नहीं अलाउ करती, मत करिए। उनको मेरी बात पसंद नहीं है तो वो छोड़ के दूसरे कोच के पास चले गए। ठीक है, उनकी मर्जी है। लेकिन मैं ये रूटीनली लोगों को बोलता हूँ, हज़ारों क्लाइंटों को बोल चुका हूँ कि भाई 6 महीने साल लगा के देख लेते, कुछ बनता तो ठीक है, नहीं तो आप बंद करिए। और मैं बोलता हूँ लोगों को भाई मत करो। उसके अलावा मैं हर क्लाइंट को बोलता हूँ रूटीनली कि भैया आपकी रिपोर्टें ठीक नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाइए, बंद करिए। मैं क्लियरली बोल देता हूँ। एंड ये बात पक्की है कि अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपकी हेल्थ से, आप चाहे मुझे 10 करोड़ दे दो, मैं नहीं आपको कोचिंग दूंगा। मेरे पास चेन्नई से लड़का आया था, क्या नाम उसका, मणिकंदन, मिस्टर वर्ल्ड जीता था उसने। ठीक है, आई थिंक मेंस फिजिक में उसने, तो उसकी रिपोर्टें ठीक नहीं थी। मैंने उसको स्पष्ट साफ शब्द में बोल देते थे भाई कि नहीं, नेचुरल करा सकता हूँ, कुछ सामान नहीं यूज हो सकता। ऐसी हजारों एग्जाम्पल्स हैं, हजारों मेरे क्लाइंट्स हैं जो आपको बताएंगे। ये चीजें कभी नहीं चेंज होती। ठीक है, मान लिया कि एक आधे क्लाइंट को मैंने सर्विस अच्छी नहीं दी होगी, मैंने मैसेज नहीं रिप्लाई किया, ये नहीं किया, ठीक है, मैं मिस हो गया, वो मैं मानता हूँ। ठीक है, भगवान कोई नहीं है। लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मैंने 10,000 लोगों को कोचिंग दी आज तक, तो 10,000 में से 10,000 बंदों की ही मेरी एक ही एडवाइस रहती है कि हाँ, हेल्थ से ऊपर कोई चीज नहीं है। आप चाहे मुझे 10 करोड़ दे दो, कुछ भी हो जाए,
तो प्लीज इस चीज को समझिए, मेरी स्टांस हमेशा सेम रही है। और कोई बंदा मेरा वीडियो उठा के स्टोरी डाल रहा है कि भैया कोच ने मुझे ये दिया वो दिया, वो समझिए वो मेरे शब्द, मैंने अगर पोस्ट नहीं किया, मैंने नहीं कहा, मेरा प्लान नहीं है। मेरे वर्कशॉप में हजारों बंदे, लाखों बंदे आके अटेंड करके जा चुके हैं। और मैं हर वर्कशॉप में ये बोलता हूं कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत है जो मैं पढ़ा रहा हूं तो यहां बोलिए। आज तक तो मैंने हजारों लाखों बंदों को मैंने पढ़ा दिया, 15 साल में वर्कशॉप्स कर दी। आज तक तो एक बंदा मेरी वर्कशॉप में बोला नहीं कि भैया हमें आपकी ये बात पसंद नहीं, आप गलत सलाह दे रहे हो, आप बॉडी स्टीरॉइड्स प्रमोट कर रहे हो। हर वर्कशॉप में मैं ये स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं, हमारे पास हर वर्कशॉप की वीडियो रिकॉर्डिंग है, हर की। और मैं वहां पे स्पष्ट शब्द में बोलता हूं कि भैया स्टीरॉइड्स मत यूज करो, मत यूज करो, मत यूज करो, मत यूज करो। आपने बाहर जाके झूठ बोलना है, बकवास करना है, वो आपका ज़मीर है। जान आपने देनी भगवान को, मैंने भी देनी है, आपने भी देनी है। ऊपर कढ़ाया तैयार है आपके लिए। जो बाहर जाके झूठ बोलते हैं, भैया आपके लिए मोटा कढ़ाया तैयार है, याद रखना। Another thing, I have done hundreds of workshops, have certified thousands of coaches in the last 15 years, all over the world. People who have attended my contest prep workshop, in every workshop I say to people, looking in their eyes in person, you have a problem with what I'm teaching here, you have a problem with anything I'm saying, you're sitting there, you're welcome to open your mouth. No problems at all. You're welcome to open your mouth. Yet you don't. And in every workshop, I categorically state this in no uncertain terms. And we have video recordings of every workshop we do. I state very clearly, please do not use steroids. My overwhelming undertone of all my workshops is throughout 9 hours is I try to tell people don't do it. Becoming a mass monster is very high risk, very expensive. So unless you've been there, you've had a problem and you didn't have the courage to say to my face, I have no respect for you. You want to take something, you want to talk nonsense sitting on social media, that's fine. That's not my thing. I don't get into debates, I don't get into arguments, I don't need to. I am there, I go to expos, I meet people in person all the time. I'm easy to find. You got a problem, you know where to find me. I'm there. So अगर आपको किसी को लगता है तो भैया हजारों जगह पे मैं जाता हूँ, हजारों बंदों को मिलते हैं, हर एक्सपो में जाते हैं, हर शोज में जाते हैं, सारों दिन बाहर ही होता हूँ मैं, ठीक है। सो अनटिल अनलेस के आपने मेरे चैनल से, मेरे थ्रू, मेरे मुंह से सुना है कोई भी चीज़ है, जैसे कि ये मेरे क्लाइंट ने एक्साइटेड होकर लिख दिया कि 72 घंटे मैंने पानी नहीं पिया और मैंने 3 दिन से, मैंने 8 हफ्ते से मैंने कार्ब्स नहीं खाए और मैंने सॉल्ट नहीं खाया। ये भावुक होके स्टेटमेंटें डाली हुई हैं, उसने बेचारे ने डिलीट भी कर दी वो पोस्ट स्टोरी, ठीक है। भावुक होके लोग डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो। कल तक 6 लीटर पानी पी रहा था, आज भी 1 लीटर पानी पी रहा है, 24 घंटे नहीं हुए नमक काटे हुए, और कार्ब साइक्लिंग करते आए हैं हम उसके साथ। कोई 8 हफ्ते 0 कार्ब से, उसने बेचारे ने बुरा मना के उसने डिलीट भी कर दिया। The post, the story that you saw at the beginning, the screenshot that you saw, or you can see even now, this chap has not been on without water for 72 hours. He was on 6 liters of water till yesterday. Even today he's on 1 liter because he's got weight to make tomorrow morning. He has not been without carbs for 8 weeks. He's been carb cycling. He has not been without salt for no more than 24 hours. So only thing is the chap got carried away, got emotional. He posted it, on his story, and then, I reshared it in my story as well. And then he deleted it and he messaged me that, coach, I'm sorry, it wasn't for you or whatever, blah, 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 and all that. And that's okay. But it's things like these, people will screenshot it. They'll put it on YouTube. They'll put it somewhere. Okay, this is what he's teaching. Like he's keeping his clients without water for 3 days. He's not giving them sodium, salt for 8 weeks, 2 months. He's not giving them carbs for 8 weeks. Nobody is going to fucking stand there and spend a minute and let me just corroborate. Let me just see whether this is true. No, because why? People love drama. They want to put it out there, and any tall poppy syndrome is well and truly alive. Okay, this guy is wearing a suit and tie. Let's pull him down.
Don't you have this much integrity? Don't you have anything better to do? Rather than just like slander people and pull them down, bring them down. Is that all you've got in your life? How about you focus on being productive, being positive, focus on your own lives. Make something worthwhile of your life. Rather than sitting and waiting for something to pull somebody down. Like, be better. लोग होता क्या है कि किसी ने डाल दिया, उन्हें तो ये हाँ जी देखो हैरी संधू 3 दिन से 4 दिन से अपने क्लाइंट को बिना पानी के रखा हुआ है, 2 महीने से नमक नहीं दिया, 2 महीने से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दिए. ठीक है, किसी यूट्यूबर, किसी ने इन्फ्लुएंसर ने, किसी ने नहीं पता करना कि भैया मैं एक बार हैरी संधू से पूछ लूं कि भाई ये आपका क्लाइंट बोलते हैं ये सच है कि गलत है. नहीं जी, क्लाइंट ने बोल दिया, किसने डाल दी स्टोरी, सही होगा. मतलब कि वल्चर्स होती है जैसे स्कैमर, ऐसे बैठे हैं लोग, मतलब कि हाँ कहीं चीज मिल जाए. ये नहीं हमने 1 सेकंड भी लगाना कि इसको मैं स्थापित करूं कि ये बात सच्ची भी है कि नहीं है, उठा के डाल दो. ये नहीं सोचना कि उसके रिपरकशंस क्या है, उसका अफेक्ट उसके बंदे के ऊपर क्या हो रहा है, उसके बिजनेस पे क्या हो रहा है, उसकी फैमिली पे क्या हो रहा है, उसका काम उससे चल रहा है, वो कोई परवाह नहीं है. यार आपने जर्नलिज्म करनी है, आपने करना है, कुछ भी करना है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबली करो. इसीलिए आई स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. आई माइंड माई ओन बिजनेस. मैं अपने काम से काम रखता हूं, मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज मुझे पता है कि ये दलदल में से निकलना कुछ नहीं है. मेरा टाइम खराब होगा, ठीक है, मेरा शब्द तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हारा शब्द मेरे अगेंस्ट. भाई आप अपने घर में खुश हो, मैं अपने घर में खुश हूं, आप अपना काम करो, मुझे अपना करने दो. बाकी अगर आपको किसी चीज में डाउट है, कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो मेरा नंबर मेरे इंस्टाग्राम पे हर जगह पे है. Anybody has any questions or doubts about anything, my number is everywhere. 7827466221 is my number. हर किसी को पता है, इंस्टाग्राम पे हर पोस्ट में होता है मेरा नंबर. सो प्लीज, कोई भी आप चीज कहीं देखते हैं, किसी ने आगे बोला कि हाँ जी हैरी संधू ये कर रहा है, उसने ये बोला था, प्लीज यू हैव अ क्वेश्चन, यू हैव अ डाउट, come to me, check with me, and then take it from there. On that note, thank you very much everyone. धन्यवाद आपने ये सुना, ये इम्पोर्टेंट था. मुझे लगता है कितने लोग सुनेंगे, कितने नहीं सुनेंगे, बट जिन्होंने सुना है धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आपके. एंड ऑल्सो ऑल कोचिंग इज डन बाय मी ओनली, नॉट बाय एनीबडी एल्स. इफ यू आर नॉट गेटिंग अ मैसेज और अ कॉल फ्रॉम 7827466221, जो नंबर नीचे भी दिया हुआ है, देन इट्स नॉट मी. इफ इट्स माई टीम और व्हाटएवर, confirm with them this is sir's number, message me directly, hey I got message from this number. I'll tell you if it's our team's number or not. मैं सिर्फ एक नंबर से ऑपरेट करता हूं जो नीचे लिखा हुआ है, और सारी कोचिंग मैं खुद करता हूं. कोई ऐसा नहीं है कि मेरे आगे मैंने टीम रखी हुई कि हाँ जी पैसे मैं ले रहा हूं, वो आगे कोचिंग को दे रहा है. जब जो क्लाइंट मेरे साथ काम कर रहा है वो डायरेक्टली मेरे साथ काम कर रहा है, वो मेरे से वार्तालाप हो रही है. जो नीचे नंबर दिया है उस पर, अगर आपको किसी और नंबर से मैसेज आता है, कुछ भी है, तो आप मुझे उस नंबर पे मैसेज करके मुझे नंबर शिखे, सर मुझे इस नंबर से मैसेज आया था. चाहे इवन इफ इट्स एकेडमी कोर्सेज, इवन इट्स फॉर एकेडमी और एनीथिंग, you can reach out to me directly. I'm pretty easy to find. Anyway, this had been building for a while. ये बहुत देर से चल रहा था, मुझे ज़रूरी था कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वीडियो बनाऊँ, थोड़ा लंबा हो गया, but I felt it was important. We'll put it out there, we'll put it in bite-sized pieces, and hope it clears everything up. Ever in doubt, come to me directly. On that note, thank you very much. कभी भी कोई शक हो तो सीधा directly मेरे पास आइए. On that note, stay safe, stay away from drugs. That's my advice. लोग सुनेंगे नहीं, people will not listen to me. They will follow their passion because they want to get to the Olympia, and I respect that. But if you ask me, my advice has always been the same since day one. I can show you 50 videos over the last 10-15 years where I have said this in one way or the other. Always. Never been different. Thank you and stay safe. Bye for now.